Good morning. I am Anil Aggarwal, former faculty member, Punjab National Bank. Now, many candidates have asked, sir, how to use mock test. I am using mock test for many years, but I am not able to perform well. Now, in this video, we will discuss the optimum utilization of mock test. In my earlier videos also, I have explained how you should prepare for various subjects like English, reasoning, quantitative aptitude, and how you should first build your base. The moment you have built your base, now time comes when you should do practice. Like IBPS PO Prim exam is now scheduled from Saturday onwards. Now this week you should dedicate for mock test only. Now in this video, that is in Hindi and English both, first part is in English, second part is in Hindi, we will cover how to optimally utilize mock test. Now certain people, they use mock test as a speed test. Speed is not that relevant as accuracy is, because none of the examination cutoff is 100% or 80%. Cutoffs are very moderate. That means even if I am able to do less questions, but all the question I am able to do rightly, or I am able to answer them correctly, I am in the competition. So what is the catchword? How to improve accuracy? Now mock test is a very good instrument in improving your accuracy. Many candidates use it to improve speed, but my advice is use this as to improve your accuracy. Now in this video I will discuss how you can improve your accuracy through mock test. Say you have started one mock test. There are 50 questions, you have attempted all the questions, and after you have verified your result, you find that 30 questions are correct and 20 questions you could not answer. Now do a diagnostic of this exercise. What type of 20 questions you could not answer? What type of questions you found difficult? What type of areas you are weak? After identification of these areas, now open your textbook. Read the basic aspects of those topics from the textbook. And these textbooks should be from class 2nd, class 3rd, class 4th, class 5th, class 6th, class 7th, class 8th. You can take NCERT books or any books recommended in local schools. Now once you go through these books and you read the fundamentals, now you have converted your weakness into strength. After doing this, now you attempt another speed test or mock test. When you will attempt this mock test, you will be again able to perform some question correctly and some question you will not be able to answer. Say in this attempt you are able to do 35 questions right and 15 questions you could not answer. Again, shortlist the areas from where the topics or the subjects where you could not answer the questions and why your questions were incorrect, your answers were incorrect. The moment you have done this diagnostic, again open these chapters in your textbook, read these chapters and try to learn the basics of those topics. So gradually you will find that in a day, even if you are only doing 10, 15, 20 mock tests, but you are improving gradually. This is as far as quant is concerned. Similar type of exercise can be done for English. For English course correction, you should refer the book of any grammar. From there you will learn the basic things and you will be able to improve. As far as reasoning is concerned, you should pinpoint your weak areas, what type of reasoning questions you are not able to answer. And in the reasoning also, then you focus on those type of questions, try to learn the techniques, how to crack this problem. So gradually what you are doing, you are converting your weak area into strong area, and the moment you are able to convert say few weak areas into strong areas, you are getting additional marks.
and these additional marks are sufficient to cover the cutoff, because usually you are not missing the cutoff by so many marks. Most of the candidates, they miss the cutoff by few marks only. So how to improve those few marks is identifying your weakness, working on the weak areas, converting it into strong area. The common mistake is I go on doing the exercise, that means I am only checking my strong areas, but I never try to convert my weak area into strong area. So real preparation is converting your weak area into strong area. Thank you very much. Now we will discuss these things in Hindi. अब काफ़ी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, पूरा पीक पीरियड है, अभी प्रीम के एग्जामिनेशन आपके इसी हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। अब इस हफ्ते में क्या करें? बेसिक तैयारी आप कर चुके हो, फंडामेंटल तैयारी आप कर चुके हो, अब ये टाइम है जबकि आपको स्पीड टेस्ट के ऊपर टाइम डिवोट करना है पूरा का पूरा। सारा वक्त आप स्पीड टेस्ट पे लगाइए, पर स्पीड टेस्ट से फ़ायदा कैसे उठाना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग स्पीड टेस्ट को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है ये स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है, नहीं, ये तरीका यूज़ होना चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पीड से। कभी भी कट ऑफ 100% नहीं आता, 80% नहीं आता। दैट मीन्स पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे कोई परेशानी नहीं है, पर ठीक नहीं कर पाएंगे परेशानी है। तो कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी करें ठीक करें, ये आपका ध्येय होना चाहिए। स्पीड के चक्कर में पढ़ के जो आते आते क्वेश्चन है उनको गलत करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, इसको एक्यूरेसी बढ़ाने में कैसे इस्तेमाल करें। आप क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट लीजिए, आपने उसको सॉल्व किया, मान लो 50 क्वेश्चन थे, क्वांट का था, 30 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, 20 गलत हो गए। अब ये 20 कौन से गलत हुए, कौन सा एरिया था जो आपको नहीं आता था, कौन सा तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, क्या डिफ़िकल्टी आई। अब आप टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक क्या होंगी, जो क्लास दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के अंदर मैथ्स की किताबें लगी हुई हैं, एनसीईआरटी की भी हो सकती हैं, किसी भी ऑथर की हो सकती हैं, उसमें से वो चैप्टर खोलिए, उस चैप्टर को पढ़िए। अब चैप्टर को पढ़ने से आपको पता लगेगा कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, उसको ढंग से समझिए, समझने के बाद चाहे आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, लगाइए। अब इससे क्या हुआ, जो आपका वीक एरिया था वो स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट हो गया। अब फिर आप दूसरी एक्सरसाइज उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अब मान लो इसमें से 50 में से 35 ठीक हो गए, 15 गलत हो गए। अब 15 कौन से एरिया के गलत हुए हैं, उसको फिर टेक्स्ट बुक से पढ़िए, फिर उसको इम्प्रूव करिए। तो आप देखेंगे धीरे 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 जो आपके क्वेश्चन बार बार गलत होते थे अब ठीक होने शुरू हो गए। यही जो एडिशनल मार्क्स हैं ये आपको कट ऑफ को पार कराते हैं। कॉमन गलती क्या है कि आप बार बार स्पीड टेस्ट कर रहे हो, जितना आता है उतने ही नंबर बार बार आ रहे हैं, तो आपकी कोई इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही है। आप अपने को बार बार चेक कर रहे हो मुझे क्या आता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे स्पीड टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे मॉक टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट को हमें इस्तेमाल करना है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्वांट हो गया, रीजनिंग में क्या करें, रीजनिंग में भी ऐसे ही एक एक्सरसाइज लगाइए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उसको टेक्स्ट बुक से पढ़िए कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। अब है इंग्लिश, इंग्लिश में आपने क्वेश्चंस करे, कुछ गलत हो गए, कुछ ठीक हो गए, किस तरह के गलत हुए, ग्रामर बुक से उसको पढ़िए। इस तरीके से आप अपने में इम्प्रूवमेंट करिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ये मेरे को पूरा विश्वास है। अब इसके अंदर काफ़ी लोगों के कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, जो हम बातें करते हैं बाद में प्रश्न भी उठ सकते हैं। जो मेरा कमेंट कॉलम है उसमें आप अपने प्रश्न डाल दीजिए, हम कोशिश करेंगे यहीं पे आपको आंसर दे दें या एक नई वीडियो बना के उसका आंसर दें। किसी भी तरह की शंकाएं आपके मन में आ रही हैं, कोई भी क्वेरीज आ रही हैं जिनका समाधान आप चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट कॉलम में आप डाल सकते हैं। और भी जो मेरी वीडियोस हैं, लगभग 300 से ऊपर की वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है। एक एक करके सारी वीडियोस यदि आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलेगी। और पास्ट के अंदर कितने ही कैंडिडेट इन वीडियोस को यूज़ करके अपना बैंकिंग कैरियर बना चुके हैं, आप भी बना सकते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ होती है सही गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो जो आप बॉर्डर लाइन केस बार बार नहीं पास कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं सक्सेस के लिए।
God bless you all and succeed in the your